Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video, we are going to learn about integers and its properties under addition and subtraction. Okay. So, what are integers? Let's have a quick recap. Integers are the numbers which can be positive, negative or zero, but it cannot be a fraction or a decimal. तो integers वो number होते हैं, it is a collection of all the positive numbers, all the negative numbers along with the number zero. But they cannot be a fraction, they cannot be a decimals. Okay, they are the numbers which can be positive, negative or zero, but they cannot be a fraction or a decimal. Now the integers are represented with the letter Z. Okay, Z or Z, they are represented with the letter Z. For example, 6, 85, 963, 0, minus 52, minus 1000 are all integers. Moving on. Now let us discuss the properties of addition and subtraction on integers. Integers की properties हम addition और subtraction के अंदर check करेंगे. We all know there are some main properties of all the type of numbers, which is closure property, commutative property, associative property and distributive property, right? But distributive property will have multiplication also, so in this video we are not discussing that. We will discuss additive identity, which is very important. Okay, so let us discuss all these properties under addition and subtraction on integers. First of all, we have closure property, in which most of the students have confusion. Now, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? पहले तो ये समझो कि ये होती क्या है. अब हम सिर्फ addition और subtraction में चेक कर रहे हैं, तो I am explaining for that only. Okay, in the upcoming video I will explain for multiplication and division also. So closure property क्या होता है कि अगर हम कोई दो integer लें और अगर हम उनको add करें तो आंसर जो बने, the sum should always be an integer. दो नंबर को ऐड करके जो आंसर बनता है, जो सम बनता है, दैट शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर. सेम वे अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होगी कि अगर हम दो इंटीजर्स लें और अगर हम उनको माइनस करें तो जो डिफरेंस है दैट ऑल्सो शुड बी एन इंटीजर. ओके, तो एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर होना चाहिए. अब देखते हैं कि ऐसा है या नहीं. लेट्स चेक फॉर एडिशन फर्स्ट. Now we are taking two numbers, say 2 and 3. Now if I add them, okay, then it is 2 plus 3, 5, which is an integer. So we will say that the integers are closed under addition. Let's take one more example. Let's take A as minus 2 and B as 3. Now if you add them, you will get 1. We will again get an integer. In the same way, you can take any number you want, जो चाहते हो वो number ले लो, and you will find that the closure property will hold under addition for integers. Hold karegi, right? Now let us check for subtraction. Now if we see subtraction and if we take these two numbers, say A as 2 and B as 3, then A minus B is equal to 2 minus 3, which is equal to minus 1. वो भी एक integer है. अब A को -2 ले लो, B को 3 ले लो. अब सब्ट्रैक्ट करके देखो, इंटीजर बन गया. अब A को -4 लो, B को -5 लो, सब्ट्रैक्ट करो, +1, वो भी एक इंटीजर बन गया. Right? What does it states? It states that the closure property of integers is true under subtraction also. मतलब अगर हम दो इंटीजर लें और अगर हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो इंटीजर ही बनता है, जो भी उसका आंसर होता है. राइट? तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. राइट? Coming up to the next property, which is commutative property, and first of all we are going to check under addition. Okay, but सबसे पहले commutative property होती क्या है? Commutative property is that if I change the orders of the numbers we are adding, it will not change the result. Order of numbers क्या होता है? Order of numbers होता है उनकी जो position है. जैसे मैंने यहाँ लिखा है A plus B. A फर्स्ट प्लेस पे है, B सेकंड प्लेस पे है, राइट? अब ऑर्डर का चेंज करने का मतलब है B को फर्स्ट प्लेस पे ले आओ और A को सेकंड प्लेस पे ले आओ, मतलब शिफ्टिंग करना.
ओके, सो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स मीन्स उनकी पोजीशन को शिफ्ट करना। शिफ्ट करते हैं हम कॉम्यूटेटिव में, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वो सेकंड पे चला जाता है, जो सेकंड पे होता है वो फर्स्ट पे आ जाता है। बट ऐसा करने के बाद भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट रिमेन सेम। और अगर वो सेम हो तो इसका मतलब है कि दोज आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। चेक करें कैसे। Let's check for addition. Let us take a as 2 and b as minus 3. If you take a plus b, it will be 2 plus minus 3. Minus we always write in a bracket, remember? And we know that plus minus will be minus. So 2 minus 3 will give you minus 1. Now let's take b plus a. b क्या होता है? minus 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, plus 2. minus 3 plus 2 is minus 1. Now minus 1 is equal to minus 1. That means commutative property holds under addition. ऐसे ही आप जितने मर्जी नंबर ले लो, जितने मर्जी नंबर ले लो, they all will hold under addition. That means we can say that commutative property of integers, they hold under addition, right? Next, we will check same property under subtraction. Now, what does it mean? It means कि अगर हम, if we change the order of the numbers we are subtracting, it will not change the result. मतलब अगर हम दो numbers को subtract कर रहे हैं और अगर मैं उनका order change भी कर दूं, तो भी उसका जो result है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? तो देखें, check करें. Let's take some example and see. Now let us take a as 2 and b as minus 3. ठीक है, अब इनको माइनस करके देखो, a माइनस b, a की जगह 2 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस रहेगा, b की जगह हम लिख रहे हैं माइनस 3, दैट वी विल पुट इन अ ब्रैकेट. ओके, देन b माइनस a, b माइनस 3 माइनस a की जगह हम लिख रहे हैं 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस, सो 2 प्लस 3 इज 5. Now minus 3 minus 2, same signs add होते हैं, minus 3 minus 2 will be minus 5, right? So left hand side is not equal to right hand side. Okay, so that means commutative property of integers does not hold under subtraction. 5 तो minus 5 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब commutative property जो है वो minus subtraction के अंडर hold नहीं करती, subtraction के अंडर hold नहीं करती. That means we can say that commutative property of integers will hold under addition but not under subtraction. Now let's move ahead and let us check associative property under addition. Firstly, let's understand what do you mean by associative property. Well, according to associative property of addition, the sum of three or more numbers remain the same regardless of how the numbers are grouped. Okay, इसमें हम 3 और 3 से ज़्यादा नंबर लेते हैं और हम इसमें ग्रुपिंग करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव में हम उनकी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, राइट? सो कॉम्यूटेटिव में शिफ्ट और एसोसिएटिव में ग्रुपिंग. दैट मीन्स अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर हैं तो इसमें हमने फर्स्ट 2 को ग्रुप कर लिया, नेक्स्ट में हमने सेकंड और थर्ड को ग्रुप कर लिया, राइट? एंड लेट्स चेक कि ये एडिशन के अंडर होल्ड करता है कि नहीं. लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक 2 डिफरेंट नंबर्स, 3 डिफरेंट नंबर्स एंड लेट्स चेक. तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस c शुड बी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c. ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करो 1, b की वैल्यू पुट करो -2 प्लस -3 एंड हियर इट इज 1 प्लस -2 प्लस -3. ठीक है, कर दिया. अब 1 प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 2 इज -1 प्लस -3 -1 प्लस माइनस माइनस -1 -3 विल गिव यू -4. अब इस साइड को करके देखते हैं. 1 प्लस -2 प्लस c की जगह -3 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है. ब्रैकेट को खोलोगे प्लस माइनस माइनस, तो -2 -3 विल गिव यू -5. इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा -4. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल होल्ड अंडर एडिशन. क्यों? क्योंकि -4 इज इक्वल टू -4. सेम वे अगर आप डिफरेंट नंबर लोगे तो यू विल सी कि ये होल्ड करती है, right? So we can say that the associative property of integers hold under addition. -4 is equal to -4 तो hold करती है. You can take different numbers, you can check and you will find कि it is true,
राइट। नाउ लेट अस चेक अंडर सब्ट्रैक्शन, देखते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन के अंडर होल्ड करती है कि नहीं। ओके तो इसका पहले मतलब समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि अगर हम 3 या 3 से ज्यादा नंबर लें और उनका फिर डिफरेंस निकालें तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ग्रुप्ड द आंसर विल बी सेम। That means a minus b bracket close minus c is equal to a minus bracket close b minus c. Now let us take some examples. So let us take a as minus 1, b as minus 2 and c as minus 3. When you will substitute keeping the negative numbers in a separate bracket and then solving, you will find that 6 will come over here and 0 will come over here, and obviously 6 is not equal to 0. That means I can say that associative property does not hold under subtraction. तो हमने ये किया कि commutative और associative property दोनों ही subtraction के अंडर तो hold नहीं करती but addition के अंडर hold करती है, right? So coming up next and very important जिस पे बहुत सारे MCQs आते हैं, it is additive identity. Now what do you mean by additive identity? Well, additive identity is a number which when added to any number gives the sum as the number itself. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी हम उसको बोलते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें, अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें तो जो भी आंसर आए वो सेम ही हो, जो भी नंबर है उसके जैसा सेम हो। मतलब किसी नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि उसका आंसर सेम आए, किसी भी नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि उसका आंसर सेम आए। अब ऐसा तो एक ही नंबर है जीरो, क्योंकि जीरो को किसी में भी ऐड कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि वी कैन राइट दैट a प्लस जीरो और जीरो प्लस a विल गिव यू द सेम आंसर। ठीक है, तो दैट इज वाई जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी, अंडरस्टूड? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, right? In the next video where I will be discussing the properties of integers under multiplication and division, we will discuss about multiplicative identity also. Okay? So let us now learn about additive inverse. What is additive inverse? Additive inverse is a number which when added to any number gives the sum zero. अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी वो था कि ऐसे का नंबर जिसको किसी नंबर में प्लस करूं ऐड करूं तो सेम आंसर आए, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। पर एडिटिव इनवर्स उसको बोलते हैं कि कोई ऐसे का नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर जीरो आए, कोई ऐसे का नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर जीरो आए, राइट? सो ऑपोजिट ऑफ एनी नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स, मतलब उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो। अगर वो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, the number will remain same, that is a plus minus a or minus a plus a is equal to 0. Let's see, for example, if I am given to find out the additive inverse of minus 5, then the answer will be 5, and the additive inverse of 7 will be minus 7. Plus है तो minus कर दो, minus है तो plus कर दो, that's it. That will give you the additive inverse. Okay, so let's have a quick recap. Let's check the properties and they hold or not under addition. So closure property, yes, it holds under integers, under addition and subtraction both. Okay, so integers are closed under addition and subtraction, and integers are commutative and associative under addition but not under subtraction. Integers are commutative under addition but and associative under addition but not under subtraction. So that's it. Hope you have understood and hope you will learn it properly. I hope you have understood the concept and you will be able to apply it. So thank you all. Keep learning, keep growing. Bye.